motivation? So my biggest motivation is my mother. The adversities that she had faced and how she has resiliently came out of it motivates me a lot to work hard and to strive for my goals. Without any doubts, I am sure that you are going to not just get a rank this year, but the desired service this year. इसमें मुझे कोई भी रत्ती में doubt नहीं है. And I will be the proudest. Sir, it is all your efforts. I attended all your courses from Conquer to High Rise to last year's SFG means. I am so thankful to hear that. So grateful to hear that. All the Thank you very so much, best, sir. Thank you so much. And you will do really good in the interview. Sir, it is an honor to meet you. Sir, last year I couldn't. This time I am. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम सत्यम जैन है। ये एक मॉक इंटरव्यू की वीडियो है। जिस मॉक इंटरव्यू को अभी आप देखेंगे वह मनु गर्ग, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस वर्ष 91 रैंक लेके आए हैं, उनका है। और इस मॉक इंटरव्यू की स्टार्टिंग में मैं इंट्रोडक्टरी मैसेज क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बताना बहुत बहुत अनिवार्य है। इतनी विषम परिस्थिति आ गई थी इनकी ज़िंदगी में कि कुछ वर्ष पूर्व ये अपनी आई साइट, अपनी देखने की क्षमता को खो बैठे थे। मुझे आज भी याद है जब मॉक इंटरव्यू के लिए ये हमारे ऑफिस में अपनी माताजी के साथ आए थे, तो इन्हें देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि कैसे एक बच्चा, मतलब सोच के देखिए कि हमारी देखने की क्षमता जिससे शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, वो अगर चली जाए तो इट इज़ अ वेरी 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 डॉन्टिंग समथिंग दैट इज हैपेंड इन योर लाइफ। और हम अपने आप को सिर्फ कोसते रहें, उससे कभी उभर ना पाए। लेकिन मनु से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे विषम से विषम परिस्थिति से भी लड़ के उसमें ऊपर उठा जा सकता है। मुझे आज भी याद है कि कैसे जब मनु गर्ग यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू दिया, बहुत ही शानदार इंटरव्यू दिया। मैंने उनकी माताजी को बोला था कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मनु की इस बार पक्का रैंक आ रही है। मुझे आज भी याद है कि जब यूपीएससी का फॉर्म भरा जाना था, मनु के इंटरव्यू के कुछ दिन बाद की वो बात है, यूपीएससी का फॉर्म भरा जाना था। और इस बार स्क्राइब करके जो एक चीज़ होती है, स्क्राइब होता है कि आपका मेंस का पेपर कौन लिखेगा, क्योंकि आपकी देखने की क्षमता नहीं है तो आपका पेपर कोई दूसरा इंसान लिखेगा, तो उसको स्क्राइब बोलता है। तो यूपीएससी पहले स्क्राइब जो है वो मेंस के टाइप पे भरवाता था, इस बार प्रीलिम्स के फॉर्म में भरवाया। तो मनु मेरे पास आया कि सर मुझे कोई स्क्राइब नहीं मिल रहा है, तो स्क्राइब का आप मतलब इसमें मेरी कुछ हेल्प करिए। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने बोला मनु को कि आप यहाँ पे आ गए हो, चिंता मत करो, मैं अपनी हर कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो इस लेवल तक की होनी चाहिए, इस लेवल तक की नहीं होनी चाहिए, आपके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमने बहुत ढूंढा और हमें कोई स्क्राइब मिल ही नहीं रहा था। हमारी एक फैकल्टी थी जिन्होंने कुछ पेपर्स लिखने के लिए एग्री किया, और फिर मैंने मनु को बोला कि आपकी बाकी के सारे पेपर्स में ही लिखूंगा इस बार मेंस के। तो हालांकि कुदरत को, ऊपर वालों को जोरी मंजूर था और मनु की बहुत ही शानदार रैंक आई है, बहुत ही शानदार रैंक आई है। लेकिन अगर नहीं आई होती तो उनके मेंस के पेपर इस बार लिखने का सौभाग्य मुझे मिलता। तो ये जो पूरी जर्नी है, हमारा जितना क्लोज एसोसिएशन रहा है मनु से, ये देख के मुझे सच में बहुत इंस्पिरेशन होता है। मुझे आज भी याद है कि घर जाने से पहले लास्ट टाइम पे उनकी माताजी आई थी यहाँ पे और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मनु के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दिए। वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थे मनु के अचीवमेंट्स के बारे में। उन्होंने कौन से आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, कौन सी चीज़ें पब्लिश की हैं। आज भी मेरी डेस्क में वो चीज़ बिल्कुल टॉप पे रखी है। मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा वो पर्टिकुलर चीज़, आज भी मैंने उस चीज़ को अपने पास संभाल के रखा है। ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो मनु ने अपने अलग अलग वक्त पे पब्लिश किए। मैंने इनको पढ़ा, उनकी माताजी जब ये रखी गई है, देखिए आप अगर देखेंगे तो IJMRS की एक जर्नल होती है, उसमें मनु ने पब्लिकेशन किया, और भी बहुत सारी चीज़ें वो देखी गई है। उनका पूरा CV देखी गई, आप देखेंगे तो ये राम का CV, ये मनु की फोटो है। अभी आप देखेंगे मॉक इंटरव्यू में पूरी डिटेल्स है उनकी। तो दिस इज समथिंग, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि देखिए जब भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिंदगी जी भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि सब कुछ ऐसा होगा जो आपके हक में होगा। जो आपके हक में नहीं हो रहा है उसको किस तरीके से बदल के, किस तरीके से बेहतर करके आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयाँ छूते, मुकाम छूते हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो अब आप ये मॉक इंटरव्यू देखिए और जितनी सराहना करी जाए मनु गर्ग की उतनी करिए। अपने आसपास के लोगों को भी बताइए कि किस तरीके से एक बच्चा इतनी विषम परिस्थितियों से उठ के आसमान छू सकता है। अब बारी आपकी। धन्यवाद। ऐसे प्लीज मनु आ जाइए। प्लीज टेक योर सीट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मनु, आपकी इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या है? सर इंग्लिश। ऑलराइट। सो Manu, this is your first interview? Yes sir. CSE? Yes sir. Okay, good. And when is your interview date? 27th of January. 27th January. Good. So how does it feel, Manu, reaching the interview stage? Sir, it's feeling like I'm cloud 9, top of the world. It's feeling like I'm on cloud 9, top of the world. Cloud 9, top of the world. Good. Because hard work is being paid off.
Yes, sir. Good, very good, very good. So Manu, this will be a conversation around your DAF and something beyond, maybe current affairs, etc. At any point of time, if you want me to clear the context of a question, you can let me know. Yes, sir. And I expect utmost honesty and utmost confidence. Yes, sir. Right? Yes, sir. Great. So we'll begin the interview. Please introduce yourself. Good afternoon, sir. My name is Manu Garg. I am born and brought up by my single parent in Jaipur, Rajasthan. Then I have done my graduation from Hindu College, where I was also fortunate enough to get second rank. Afterwards, I have done my post-graduation from Jawaharlal Nehru University in International Relations. Sir, currently I am enrolled in a PhD program in Center for South Asian Studies at JNU. What is the thesis of your PhD? Sir, it is not decided yet. I have just been enrolled last week. Oh, just last week. Congratulations. Thank you, sir. Good, very good. So, but what do you want to pursue towards? What is your area of interest in PhD? Sir, I would be focusing upon the regional security of South Asia and how it is impacted by the terrorist groups and the non-state actors. Nice, good topic. A lot of application on the border security. Yes, sir. Right. Tell me, what is the meaning of net security provider? Sir, a net security provider is basically a country who tends to provide both traditional as well as non-traditional security needs to the area where it has in its sphere of influence. And can you explain more about it? What is traditional security and non-traditional security? So traditional security mostly deals with the defense aspect and the security aspect, whereas non-traditional security deals with the humanitarian assistance and disaster relief also. It also believes in the extending of like what India did in Operation Cactus or Operation Neer to Maldives. Do you think India can rightly be called as the top level net security provider in the South Asian region? Yes, sir. Sir, India as a responsible power and a net security provider has proved credentials in the South Asian region. India has taken many steps for the revitalization of SAARC and for other initiatives to provide assistance to our neighbors. But how can we say that India is a net security provider in the traditional sense when India doesn't have its own defense indigenization to the top notch level, to the maximum level? Then how is it that India is providing it to the South Asian countries? Sir, India under its various initiatives, for example, the IDEX program and the Srijan program are promoting its indigenization of defense. So we have also exported BrahMos to Philippines and are also planning to export to Indonesia on the Republic Day. Most probably it would happen. Right. So by this also we are promoting defense. And sir, also we have the RATS framework in place where we are countering radicalization and terrorism in the South Asian region also. Talking about Indonesia, what is the strategy behind inviting the Indonesian president to India? So there are several reasons. Firstly, Indonesia has become the recent member of BRICS, promoting our cooperation on a multilateral level also. So secondly, Indonesia has been our strategic partner, and also we are trying to increase our defense exports by selling $450 million BrahMos missile to Indonesia. So thirdly, Indonesia being strategically located in the Indo-Pacific, therefore it becomes even more relevant as Indo-Pacific is emerging as new theatre of command, new theatre of warfare. Do you think there is a China angle to it? Yes, sir, we can extrapolate a China angle also because China is trying to bully its neighbors, especially in the Southeast Asian region, in the South China Sea area, by having bullying tactics in the South China Sea. So therefore, India trying to extend its support to Indonesia is a good step. When was the last time we invited a Southeast Asian leader to India on such a huge occasion? Sir, if I am allowed to take a guess. You may or you may not. Sir, it was during the COVID period, the recent time, 2020 and 2021, when we invited all the 10 members of the ASEAN. Alright. Who is your favorite political thinker of all times? Sir, of all times, I would consider Michel Foucault. And tell me what particular theory inspires you the most, or it is the most impressive to you? So the theory of discourses and how our narratives and our thought processes are shaped by the discourses that are emerging in the society. The particularly concept of biopower and how power moves through the capillary action of the societies and influence our thinking and thought process. Explain it to me through some examples. Sir, for example, when a child is born, he is unaware about all the identities. And with time, all the identities are forced upon him or inculcated in him by different spheres of education or school or family. So is that a positive thing or a negative thing? Sir, it can have both consequences as social conditioning can lead to the behavior mapping of an individual and how he operates in the society.
However, it can also lead to a panopticon state phenomena where every action of an individual is monitored and noticed and being corrected every time. Right. Tell me, how do you think India is balancing the growing nexus between the RCP countries, Russia, China and Pakistan? Yes. Sir, regarding Pakistan, our stance is quite clear that terror and trade cannot go together. Terror and talks also cannot go together. So regarding Russia, we are increasing our cooperation, and the recent support by India to Russia during its crisis period shows our enduring interest. And also regarding China, we are currently in disengagement process on our borders. And our Honorable Prime Minister is also to visit China in the recent times. So it looks optimistic to me. Right. You said India is helping Russia in its recent crisis. How are we doing that? So we are trying to buy Russian oil and to offset the sanctions. So therefore, it can export and can sustain its economy. Okay. So we are also helping in the negotiations and to end the conflict. Right. The President of United States has recently passed on a bill regarding citizenship, or an order, if I may say so, an order regarding citizenship. What is it and what will be its ramifications? So the recent executive order is to ban the birthright citizenship in America. It had an impact on the people who want to seek the green card in America. If US followed the concept of jus soli, where if a person is born on American soil, he was considered to be an American citizen. So banning this regime would lead to firstly 10 lakh Indians are in the queue to await the green card, and their interest might be affected. So secondly, it would also lead to immigrant crisis in USA, where many people are nowhere to go and they would be deported back. Tell me, what is this particular year? There was a major issue of private consumption that was not rising in the economy. So tell me, in the budget, what can be done to raise private consumption? Yes, sir. Sir, there is firstly there is the proposed 8th pay commission hike, which would raise the fitment level of the government job income. So this would lead to more demand and rise in the private consumption. So secondly, then there is a direct tax code which is coming in. Our honorable finance minister has announced the replacement of the Income Tax Act 1961. So the change in the tax regime and the tax structures would also lead to increase in private consumption. All right. You like to write articles on current Indian geopolitics. Yes, sir. Where do you write them? Sir, I have written a few articles in international journal. Also, I have written many of them in the magazines of different colleges of DU. All right. What was the last audiobook that you heard? Sorry, sir, I could not. The last audiobook that you heard? So recently, I was reading about the Checkered Brilliance, which is a book by Mr. Jairam Ramesh. Sir, it is a biographic take on the life of Mr. V. Krishna Menon, who was the Defence Minister of India during the Indochina crisis of 1962. Tell me more about it. Let's discuss this further. Through the book, what did you get to understand regarding the situation of India during the particular crisis, or the performance of the personality in question, the personality in discussion? So V. Krishna Menon's personality is quite checkered, as the book's title mentioned. He was appointed by Mr. Nehru, and his appointment was also controversial at that point of time because there was the 1959 military jeep crisis and allegations of corruption in Indian Army. Sir, after the India's loss, he was forced to resign. So V. Krishna Menon, Mr. V. Krishna Menon is also the person who is still regarded as the person with the record of delivering the longest speech in the United Nations General Assembly. It was regarding the issue of Kashmir. So it is a mixed bag when I analyze how his legacy would be. Right. Jaipur and overall Rajasthan is going through a water crisis. Yes, sir. Especially the groundwater depletion is happening at a very fast pace. Tell me, what are the reasons behind it? And second, then tell me the solutions that can be implemented. Something new, not the existing ones. Something new that can be implemented. Sir, the crisis is due to multiple factors. Firstly, any part of the country on the trajectory of development tends to grow through indiscriminate use of water. So secondly, there is the exploitation of underground water, which is happening at the rate of 0.3 meter annually. So thirdly, there is also the concretization that is hampering the inflow of rainwater into the aquifers of underground water. So the solutions that I propose is, firstly,
we need to focus more on the traditional water aspects, the traditional water conservation techniques. For example, I took the case study of the Johad project in Alwar. It has proven out to be a great success, where people install tankas in their household to conserve water rather than the rainwater harvesting systems. Sir, secondly, I also want to promote the blue-green infrastructure projects in Jaipur and Rajasthan so that the water could seep in. Sir, thirdly, we need to take inspiration from our leaders, for example, the waterman, Mr. Rajendra Singh, who has done great contribution in reviving many rivers of Rajasthan. Good. Tell me, what was the export value of India last year? Sorry, sir, I cannot able to recall. I will. What is the projected fiscal deficit of India this year? Sorry, sir, I will have to read more. I'm not sure. Okay. What is the target of the National Green Hydrogen Mission? Sorry again, sir, I'm not able to recollect right now. Okay. Tell me the positives and negatives of social media's impact on mental health. So the positives are, firstly, it leads to formation of a peer group among many people. So it compresses the geography and time. Therefore, people can reach out if they are having any mental health crisis. So secondly, it also destigmatizes mental health crisis. For example, we hear of many people who are suffering, so a person does not feel alone. Sir, however, there are many negative instances also. So firstly, the social media's effect on mental health leads to a situation where a person feels that he has many people to talk to, but still is lonely and isolated. So secondly, there are cases of cyberbullying and cyber harassment. For example, the grooming gang in UK is a good example. So thirdly, it leads to a deep entrenched addiction in people. For example, the recent case of TikTok revival and in the USA tells that how much the Americans were addicted to it. Right. What is the recent report or the recent achievement of India on INDCs? How much have we achieved? How much is left? Sir, India is working hard and it's on the way of achieving our INDCs targets. Sir, we have revived our INDC in the form of Panchamrit targets. So secondly, in the global stocktake, India is considered to have fulfilled its target of net zero by 2070. So thirdly, India is also promoting the mitigation measures and adaptation measures through various international organizations, which is also helping India. Sir, one more point is that India has also put forth this principal stand against the adaptation fund, and President Trump opting out of the Paris Climate Accord would also lead to negative spillovers to Indian INDC commitments. Right. Tell me, this is an interesting name, Jatayu and All About Happiness. What is this? So these are two separate organizations. Okay. So firstly, Jatayu was a society which works for the animal welfare. So it basically worked for the vulture protection and distributing radiant fluorescent collars to the street dogs. Okay. Sir, All About Happiness is an NGO which works for distributing blankets, especially in winters, to the people on the roads, on the streets. Okay. Who is the current Vice Chancellor of the University of Delhi? Sir, it is Mr. Yogesh. I am very impressed by you, Manu. Tell me, what is your reason behind joining civil services? Sir, since my very childhood, I was fascinated by the prospect of government. That how a single organization like the government can play such a big role in the impact in the lives of people. So secondly, when I joined my college, I also got an opportunity to participate in many social service organizations and societies. So there I developed a keen interest in helping out people. And I think that civil services provide me with that opportunity to have social stability as well as an vista to work for the people. So these both things combined motivates me to join civil services. What do you look up to in life? Who is your motivation? So my biggest motivation is my mother. The adversities that she had faced and how she has resiliently came out of it motivates me a lot to work hard and to strive for my goals. Great. I really wish you all the best for that, Manu. Thank you, sir. I don't think you need to improve on anything, to be very honest. You are a perfectly articulate candidate, one of the best articulations that I have seen, and the depth of knowledge that you carry, all the things that I teach to any particular student, which is to be specific, to be innovative, to have depth in their answers,
to have critical understanding of subject matter. Everything is brilliantly placed in your particular case. Thank you, sir. So I really appreciate the amount of effort that you have put in preparing all these things. For example, if I simply start with the net security provider thing, you had a very clear understanding of what it means to be a net security provider and how India is one, why we bringing Indonesia onto the table. And you don't need to ask the panel that should I guess or not. Just drop the question then and there. Yes. Okay? Don't even try for that. Guessing doesn't work in the UPSC interview. Yes. मना कर देना है ना, कोई जरूरत है नहीं हमें, बहुत सारे चीज़ें हमें पता है, बहुत सारे आंसर्स हम कर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन की, सीधा बना करिए. Yes. फिर पॉलिटिकल थिंक का मैंने आपसे पूछा, उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन, आइडेंटिटी एंड ऑल का बहुत ही बड़ा डिस्कशन. जहाँ भी मैं आपसे कोई एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिखते हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. फिर एक जगह जिसमें मैंने आपसे पूछा कि प्राइवेट कंजम्पशन कम हो रहा है, उसको बेहतर करने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बजट में क्या करेगी? Yes. तो वहाँ आपने जो 2 पॉइंट्स बोले वो इस बजट से रिलेटेड नहीं है. जैसे मान लीजिए 8th पे कमीशन भी है, जितना मैं जानता हूँ वो नेक्स्ट ईयर जाके इम्प्लीमेंट होगा. सर पर उसकी गाइडलाइंस अभी इस बजट में अनाउंस होगी. लेकिन अभी इस बजट के आने की वजह से कैसे प्राइवेट कंजम्पशन बेटर हो जाएगा? गाइडलाइंस आने से तो प्राइवेट कंजम्पशन बेटर नहीं हो जाएगा ना. Yes. तो आप उन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे. तो एक वो है. उसके बाद जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर था वो बहुत बढ़िया था. रशिया, चाइना, पाकिस्तान वाला एंगल बहुत अच्छा था. आप बहुत ही डिसाइसिव दिखते हैं अपने आंसर्स में. और विकी मैनन और यहाँ पे भी मुझे बहुत मतलब आप क्लियर दिखे अपने स्टैंड में. आपने किसी पर्सनैलिटी की बहुत तारीफ नहीं की, बहुत क्रिटिसाइज नहीं किया. यू केप्ट हिस्ट्री एज इट इज. वाटर क्राइसिस पे स्टैंड बहुत अच्छा था. सोशल मीडिया पे जो पॉइंट्स है, सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आंसर का डेप्थ बढ़ाया जा सकता है. Yes. वो मुझे बहुत ही सरफेस लेवल लगा कि अकेले लगते हैं, लेकिन अकेले नहीं लगते हैं, और पीयर ग्रुप बन जाता है. मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है उसको. Yes. सोशल मीडिया को यूज करके कौन से लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को बेटर प्रमोट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या केस स्टडीज हैं उसकी, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो आपके बाकी जो आंसर्स हैं उसी के लेवल पे आ जाएगा वो. Yes. मैंने जानबूझ के आपसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे ये देखने के लिए कि आप उसको कैसे डक करते हैं, क्या करते हैं. और बैक टू बैक 3 आंसर्स आप थोड़ा एक तीसरे आंसर को करने के लिए हल्का सा यू वर ईगर, बट देन व्हेन यू अंडरस्टूड दैट यू हैव टू टेक अ गेस, यू बैक ऑफ, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. है ना, यही मैं सिखा रहा था आपको पहले कि जब भी लगे कि नहीं हो रहा था तो बैक ऑफ करिए, चाहे वो कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना जाए. सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन में ही इंसान गैस मारने की कोशिश करता है और वहीं गड़बड़ हो जाती है. तो वो नहीं करना है. और ये मैंने जानबूझ के एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया कि उसके बाद का जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कैसा आएगा. तो जैसे मैंने इसके 10 बार सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन पूछा और वो आंसर उतना अच्छा नहीं आया. तो अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं. एक ये हो सकता है कि प्रेशर में आपने उस आंसर को उतना अच्छा नहीं किया. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको एक्चुअली में वो याद नहीं आ रहा था. तो आपको देखना पड़ेगा कि किस रीजन से वो आंसर आपका उतना बेहतर नहीं हुआ. अगर आपने पहले पढ़ा था तो इसका मतलब आपने प्रेशर में अगले क्वेश्चन को इम्पैक्ट होने दिया, वो नहीं होने देना है. मेरी बात बिल्कुल याद रखनी है कि नॉलेज जहाँ लैग करेगी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन लैग करेगी, दैट इज कंप्लीटली ओके. है ना, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरह ही लेना है. IAS की बनना चाहते हैं, वो सब आंसर आपके बहुत अच्छे थे. मोटिवेशन का एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत ही पसंद आया. INDC वाले पे आपको काफ़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल नॉलेज है. तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मेजर एस्पेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है. जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे के आइए. और वंस यू डू दैट, आई एम विदाउट एनी डाउट्स आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू नॉट जस्ट गेट अ रैंक दिस ईयर बट द डिजायर्ड सर्विस दिस ईयर. इसमें मुझे कोई भी रत्ती भर डाउट नहीं है. एंड आई बी द प्राउडेस्ट. Sir, it is all your efforts. I attended all your courses from Conquer to High Rise to last year's SFG means. I am so thankful to hear that, so grateful to hear that. Yeah, फिर तो I'm really glad. मुझे पता नहीं था कि वो associated with us. ये सुन के मुझे और भी अच्छा लगा. And मैं जितनी भी मेरी विशेष आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. लाइक ब्रिलियंट परफॉर्म करके आएंगे आप. The board will be so impressed. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हल्का से आपको लगे कि बोर्ड ड्रिलिंग हो रहा है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर को नहीं आता है, बस इस कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिएगा बिल्कुल भी. Yes. है ना, इसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है एंड यू परफॉर्म अमेजिंग. Yes. आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. सर डाउट ये था कि PhD में मेंशन करूँ कि उसको स्किप कर दूँ क्योंकि जस्ट लास्ट वीक एडमिशन हुआ है. अगर रिसर्च मेथोलॉजी पे क्वेश्चन आएंगे तो आई वोंट बी एबल टू आंसर टू दैट. मेथोलॉजी पे? यस सर.
नहीं, मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं मेंशन, लेकिन पूरा मेंशन करिए कि सर रिसेंटली लास्ट वीक आई आल्सो गॉट एन इन्वॉल्वमेंट इन माय पीएचडी, है ना? तो पूरा मेंशन करेंगे तो वो समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आईपीएस जाता है और वो बता देता है कि सर मैं अभी 10 दिन पहले ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो उससे वो ट्रेनिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं फिर। Yes. तो वो बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बताया जा सकता है, लेकिन वीक के साथ, Yes. टाइम के साथ। यस सर, वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा कि आप स्पेशलाइजेशन फील्ड कर रहे हो बहुत ज़्यादा टू द लेवल ऑफ पीएचडी एंड यू आर कमिंग टू सिविल सर्विसेज। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ज़रूरत है स्पेशलिस्ट की आजकल। यस लेटर एंट्री में गवर्नमेंट कर क्या रही है? स्पेशलिस्ट ही बुला रही है बाहर से। यस तो अगर हमारे अपने सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट वो चीज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस इतने सारे तो डॉक्टर बनते हैं सिविल सर्वेंट, यस तो मैंने पीएचडी पीपल में तो जाके करते हैं फिर। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यस ओके, डाउट मनु? सर ये डाउट और था, मैंने फॉरेन सर्विस को 10th में डाला था पोजीशन पे, ठीक है। जबकि मेरा पूरा आईआर है, मास्टर्स आईआर में है, सब चीज़ आईआर में। तो उसका रीज़न ये था वैकेंसीज नहीं थी मेरी, जो कैटेगरी कट ऑफ होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये फर्म की वैकेंसी जो लिस्ट आती है उसमें, ठीक है, तो एक गुड एनफ रीज़न होगा उसको डालने का। परफेक्ट। यस इससे बेटर कोई रीजन हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव रीजंस आर द बेस्ट रीजंस, यही बताना है ना? एग्जैक्टली वही बताइए, गुड टू गो। यस ओके, डाउट मनु? नो सर, दैट वाज ऑल। Okay, great. So I'll just come there and shake your hand. You are a brilliant candidate. मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप articulation, the depth of understanding is really nice. बहुत अच्छा लगा यार। All the Thank you very so much, best. sir. Thank you so much. And you'll do really good in the interview. Sir, it is an honor to meet you. Sir, last year I couldn't. This time I am. Last year you gave the interview? No, sir, I couldn't qualify mains. अच्छा, मेंस नहीं हुआ था। Yes, sir. तो इस बार तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आया यार। Even the interview is so good and you'll do really well, really well. Thank you, sir. Okay? Thank you. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज रीच आउट करिएगा। हाँ जी। Thank you.